Good morning, everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। बच्चों, मेरे लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। आज मैं आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन के वेरियस टाइप के मॉडल्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। देखिए, आपके कोर्स के अंदर मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरह के मॉडल्स हैं। पहला है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और दूसरा है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या प्रोटीन लिपिड बाइलेयर प्रोटीन मॉडल। तो पहले हम देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर plasma membrane, various models have been put forward from time to time, but none was universally accepted. In this relation, Gotter and Grandel, Davison and Danieli, they proposed models for plasma membrane. After that, fluid mosaic model for plasma membrane was proposed, which was universally accepted. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल को समझने के लिए टाइम टू टाइम पे कई सारे साइंटिस्ट ने कई सारे मॉडल्स दिए, जिसमें कि ग्रोटर थे, ग्रैंडल थे, डेवसन और डैनिली थे, और उसके बाद में आया आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। It was proposed by Singer and Nicholson. किसने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? सिंगर एंड निकोलसन ने 1912 में दिया था। This model postulates, ये मॉडल क्या बताता है? That lipid and integrated proteins are disposed in a sort of mosaic pattern. प्रोटीन्स और जो लिपिड और इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स हैं वो एक मोज़ेक फैशन के अंदर होते हैं, एंड ऑल द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हैव अ quasi-fluid structure where both lipid and protein components are able to perform transitional movement within lipid bilayer. In this model, lipid molecules may exhibit intramolecular movement or may rotate about their axis or may display flip-flap movement, including transfer from one side of bilayer to another side. इस मॉडल के अंदर क्या होता है कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये क्या एग्जिबिट करते हैं? इंट्रामोलिकुलर मूवमेंट. Intramolecular movement means inside, within the cell movement, and they may rotate about their axis, और वो अपने एक्सिस के ऊपर ही रोटेट करने लग जाते हैं, and they may display flip-flop movement. इस कैसा मूवमेंट करते हैं? Flip-flop movement, and it includes the transfer of one side of bilayer to another. Thus, this concept implies that main component of the membrane is lipid, protein, and oligosaccharides are held together by means of non-covalent interactions as suggested by Gittler in 1972. A term, amphipathy, was coined by Hartley in 1936 to the molecules having both hydrophilic and hydrophobic groups. मैंने आपको जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह के हैं, हाइड्रोफोलिक या वाटर लविंग और हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक जो वाटर से अवे रहते हैं। तो according to Hartley, this a term एम्फीपैथी एक टर्म होती है, उसका मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स हैविंग बोथ हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाइड्रोफिलिक भी हो और हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स दोनों ही हो। Thus, lipid and integrated proteins are amphipathic in nature.
इसलिए लिपिड और इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स जो है वो एम्फीपैथिक होते हैं नेचर में. Our present knowledge of plasma membrane is based on integration of data from chemical analysis and those from the study of biophysical properties with the help of various types of techniques. These have provided the main components which are integrated in plasma membrane. In this relation, following four major techniques as discoveries have given support. Another one is the unit membrane model, which is protein lipid bilayer protein model. According to this model, this is also known as unit membrane model. This model was proposed by Davison and Danieli and Robertson. किसने दिया था unit membrane concept? Davison, Daniel and Robertson. When surface tension measurements made on the membranes, it suggests the presence of protein. अगर किसी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सरफेस टेंशन क्रिएट करें तो ये सजेस्ट करते हैं presence of proteins. After the existence of proteins, the initial lipid bilayer model proposed by Gorter and Grendel was modified. It was suggested that surface tension of cell is much lower than what one would expect if only lipids were involved. It may also be observed that if protein is added to model lipid water system, surface tension is lowered. This suggested indirectly the presence of proteins. On this basis, Davison and Daniel proposed that plasma membrane contained a lipid bilayer with proteins on both the surfaces. Initially, they supposed that protein existed as covalently bonded globular structures bound to the polar end of lipid. Subsequently, they developed the model in which the protein appears to be smeared over the hydrophilic end of the lipid bilayer. This model makes it popularity for a long time. With the availability of electron microscope later, fine structure of plasma membrane could be studied. Definite plasma membrane of 6 nanometer to 10 nanometer thickness was observed on surface of all cells, and plasma membrane of two adjacent cells were found to be separated by a space 1 to 15 nanometer wide. It was also observed that the plasma membrane of most of the cell appeared to be three-layered. Two outer dense layer were about 2.0 nanometer thick and the middle layer about 3.5 nanometer. The early idea of Gorter and Grendel and those of Davison and Daniel were first formalized by Robertson in 1959 in the form of this unit membrane concept. This concept of unit membrane with three layers, two protein layer and one lipid bilayer, only supported the concept proposal earlier by Davison and Danieli. In this unit membrane, the less dense middle layer corresponds to hydrocarbon chains of lipids. Thickness of unit membrane 10 nanometer was found to be greater in plasma membrane than in intracellular membranes of endoplasmic reticulum of Golgi complex. तो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरह की सिंगर निकोलसन ने और यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट के बारे में और फ्लूइड मॉसिक मॉडल के बारे में जो आपके कोर्स में वो मैंने आपको बताया. अब नेक्स्ट में डिस्कस करने जा रही हूँ फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत से फंक्शन होते हैं जैसे फिजिकल बैरियर, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, रेगुलेशन ऑफ पैसेज ऑफ मटेरियल, मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ आयंस, response to environment, contact with neighboring cells, and biogenesis
or origin of plasma membrane. This is all about functions of plasma membrane. Thank you, बच्चों.